Hello students, a very good morning to you all. Today's lecture topic is greenhouse gases and climate change. I am Dr. Preeti Mathur, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, Ajmer. So today viewers, we'll discuss about a very good topic, very interesting topic, that is about greenhouse gases and climate change. हाँ तो व्यूअर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इस एटमॉस्फेयर में विभिन्न प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की गैसेस में आ जाती है, जैसे हमारे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। इस तरह से आदि बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और उनका अलग अलग रेशियो जो होता है वो उपस्थित होता है। जो मेजर गैसेस हैं उनके बारे में इस स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 20.03% है, अर्गन और अदर गैसेस जो हैं वो 0.93% है, और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में है। जो ब्लू एरिया है पूरा वो 78.08% एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। कुछ ट्रेस गैसेस में जैसे हमारे आ जाती हैं, जैसे एटमॉस्फेयर वाटर वेपर भी पाया जाता है, जो कि 10,000 to 2 ppm तक होता है नेचुरल सोर्स है इसका। मीथेन 1.7 ppm पार्ट्स पर मिलियन, और ये बायोजेनिक होती है। नाइट्रस ऑक्साइड 310 पार्ट्स पर मिलियन, ये भी बायोजेनिक होती है। कार्बन 50 to 500 pp और एंथ्रोपोजेनिक होती है ये। और मोनोऑक्साइड जोन, ये भी 10 ppm to 10 ppmv फोटोकेमिकल होती है ये। और हेलो कार्बन्स भी पाए जाते हैं, जो कि फ्यू हंड्रेड होते हैं जिनका पार्ट, और एंथ्रोपोजेनिक होते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं जनरली, वो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। इसमें आप डायग्राम में भी देख रहे हैं किस तरह से सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं पृथ्वी पर, और फिर वो रेडिएट होके वापस जा रहे हैं। तो कुछ पोर्शन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, और इंफ्रा रेडिएशन जो है वो सरफेस से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो द गैसेस विच मेक अप far less than 1% of the atmosphere have a much greater influence on both short-term weather and long-term climate. The less abundant gases, for example, hydrogen oxide, carbon dioxide, methane, sulfur dioxide and nitrous oxide, all have an important property. So these gases have the ability to absorb thermal energy, that is heat, emitted by the earth, and thus we are able to warm the atmosphere, and thus they are able to warm the atmosphere, and this warming is what is popularly called the greenhouse effect. This is called as greenhouse effect. तो अभी तक जो हमने स्लाइडें देखी उससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो इनसे जो है हमारा अर्थ का जो क्लाइमेट है या टेम्परेचर कह सकते हैं उसको, वो गर्म हो जाता है। इट बिकम्स हॉट, एंड सो दिस इज़ द मेजर पार्ट एंड मेजर थिंग which these greenhouse gases do. Here, these gases are called greenhouse gases as without them the surface of the earth would be about 30 degrees Celsius cooler and far too cold for life. So, as we know it to exist. On the other hand, these greenhouse gases are so thermally potent that even proportionately small amounts can cause Earth's lower atmospheric temperature to rise. So in this slide you can see the graphs, and it is about the absorption of energy by greenhouse gases, and it is telling about the percent of coming radiations absorbed. First of all, the graph is showing about the methane gas, and
Secondly, about nitrous oxide. Thirdly, about oxygen and ozone. Fourthly, about carbon dioxide. Then water vapor. And then atmosphere. So in the lower portion it is shown different wavelengths is shown, and then their percentage about radiation absorbed. About 50% of the solar radiation reaching the troposphere is absorbed by the Earth's surface, which warms up. Here there is shown a sun in this diagram. Its radiation is coming on the Earth. It includes ultraviolet, visible and infrared rays. Most ultraviolet is absorbed by ozone in the atmosphere. Some visible solar radiation is reflected, particularly by clouds, and then some of the infrared emitted by the Earth is absorbed by gases in the troposphere, which warms it up, and some IR radiation escapes from the Earth and cools it down, balancing the absorbed solar radiation. So the infrared radiation is finally from the Earth. It is emitted also outside, some part of it. So you can see in this diagram that Earth is surrounded by atmosphere, and in this atmosphere there are present various different types of clouds, and then these clouds, they restrict some poisonous and harmful gases to reach the Earth's surface. So energy balance is shown in this diagram of mine. We can see here radiation balance, which is being shown over here. This radiation balance is here, it is shown, and there is reflected, it is reflected, some portion of rays are reflected by the surface of Earth, and then reflected solar radiation is shown, and some reflected by clouds, aerosol and atmospheric gases. Some radiations are also reflected by this, and incoming solar radiations also you can see 342, and emitted by atmosphere is another, it is shown from that side. Emitted by clouds, absorbed by atmosphere, latent heat is also there, and then you can also see in this diagram that there are outgoing long wave radiation and atmospheric window, that is greenhouse gases. Some gases are absorbed by the surface, some thermal and evapotranspiration occurs, in some portion surface radiations occurs on the earth crust, and then it is absorbed by some portion of the gases is absorbed by the surface. So this is the radiation balance. This was the first part of my lecture. I end here. I again repeat my name. My name is Dr. Preeti Mathur, Associate Professor, Department of Zoology, SPC, Government College, Ajmer. Thank you.